Hello and welcome. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Access Colleges, Kanpur. Now, for today's topic is there is a totally different act, that is Consumer Protection Act. Before we discuss about Consumer Protection Act, let us consider some other aspect of this act also. And please, before we go to take this Consumer Protection Act, we must have certain idea, some idea of a topic or a act, that is Sale of Goods Act. Under Sale of Goods Act, we have already discussed about the sales, goods, but under Consumer Protection Act, we will cover sale as well as services. Clear? Under Consumer Protection Act, we will cover sale as well as services also. Earlier, this act was called Consumer Protection Act 1986. Then year 2019, government brought some certain amendments and new Consumer Protection Act was incorporated or introduced in the year of 2019, which was implemented in the year July 2020. Okay. So, under new Consumer Protection Act and old Consumer Protection Act, there was a basic difference was that in 1986 there was no online sales, online services, but the time has changed. After two or three decades, the concept of services, concept of sales has changed. Majority of the customers and service providers and sellers now switched on to a totally new or different platform, that is called e-commerce. So, in this new Consumer Protection Act, I am talking about the Consumer Protection Act, which was implemented in the July 2020, not about 1986. So, under new Consumer Protection Act, they simply brought e-commerce system, e-commerce platform under a legal umbrella, that is called Consumer Protection Act 2020. Okay. So, basically, before we discuss about Consumer Protection Act, we must know the definition of consumer. Under Consumer Protection Act, we will cover the definition, the aim and objective. When we go through our syllabus, we will find that they have mentioned certain specific point. They have simply asked about Consumer Protection Act, definitions and consumer redressal mechanism. So, besides all these topics which are mentioned in your syllabus, I have covered certain other matters also, so that you can be familiar with this Consumer Protection Act. Now, as e-commerce has introduced, e-commerce is also covered under Consumer Protection Act. So, I have provided or I have discussed about the mechanism by which a consumer or a customer can file a complaint against a service provider or seller. Okay. So, basically this is the advancement of old Consumer Protection Act 1986. Certain provisions are still there of old act, but I have combinedly mentioned both 1986 and 2020's basic provisions which one must know while discussing or while studying the Consumer Protection Act. So, with this objective, let us move to our slides. Consumer Protection Act 2019.
The Consumer Protection Act was passed by Parliament in 2019. You all know how the act are passed by the both houses of the Parliament. You know better. It came into force in July 2020 and replaced the Consumer Protection Act 1986. This is the basic summary which I have just discussed. Now, need for the new act. Why there was a need of new Consumer Protection Act? Lastly, I have just mentioned. Now, the topic is the need for the new act. The digital age has ushered in a new era of commerce and digital branding, as well as a new set of customers and digital branding, as well as new set of customers expectations. Digitization has provided easy access, a large variety of choices, convenient payment mechanism, improved services and shoppings as per convenience. However, there are also associated challenges related to Consumer Protection Act. Let us discuss it about in detail. Here it is mentioned convenient payment mechanism. पहले क्या होता था, जब भी किसी कस्टमर को कुछ बाय करना होता था तो शॉपकीपर के पास जाते थे, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते थे, सर्विसेज लेते थे, गुड्स परचेज करते थे और अमाउंट पे करते थे. ये कन्वीनियंट सिस्टम था. बट अब ई कॉमर्स के सिनेरियो में या इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर हैज़ switched to e-commerce platform. Here I mean both consumer and seller for e-commerce perspective. So, when both buyer and seller are available on e-commerce platform, here it is a line mentioned improved services and shopping as per convenience. पहले क्या मैकेनिज्म था, अगर हमको कभी कोई शॉपिंग के लिए जाना होता था तो हम लोग एक शेड्यूल्ड टाइम था मार्केट ओपन और क्लोज़ होने का, उसको फॉलो करते थे. अब क्या है कि हम लोग अपने लैपटॉप और मोबाइल पे बैठ के ईज़िली चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं. तो यहाँ पे सेलर और पेमेंट मैकेनिज्म भी ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है. तो यहाँ पे जो सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, पेमेंट जो चैनल है, इन सब की कुछ ना कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड हुई और उन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए एक एक्ट आया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था. उसको थोड़ा सा और अमेंड किया गया ये 2019 में, और जो कि अमेंड होकर 2020 में आया. बहुत ज़्यादा कोई नए चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से ई कॉमर्स को भी एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिला और ई कॉमर्स भी अब लीगली कवर होने लगा. सो मे बी you may some of the students having old books in which Consumer Protection Act 1986 was mentioned, and now as there is a situation of a pandemic and new books are not available quite easily in the market, but I have brought certain amendments which is directly taken from the Gazette of central government, which I have clearly mentioned in these slides. Second one, to help address the new set of challenges faced by consumers in the digital age, the Indian Parliament passed the landmark Consumer Protection Bill 2019, which aims to provide timely and effective administration and settlement of consumer dispute. बड़ी important बात है ये.
लॉ का जो सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, उसके थ्रू हम लोग जाते हैं, डिसीज़न हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ डिले हो जाते हैं। तो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया गया था? इंडियन पार्लियामेंट पास द लैंडमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल which aims to provide timely and effective administration and settlement of consumer dispute। किस तरीके से कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए, ये और वो भी विद इन ए टाइम मैनर, किस में पॉसिबल हो पाया? न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में। डिटेल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। प्लीज कैपिटल लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। इट इज़ ए लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर regarding defective product, dissatisfactory services and unfair trade practices। ये जो 3 words given हैं, these 3 words have a very vast meaning। defective products, dissatisfactory services and unfair trade practices। The unfair trade practices, we will discuss this in details when we cover up all the topic of the Consumer Protection Act. In earlier Consumer Protection Act 1986, there was majority of the case law relating to unfair trade practices are mentioned in your study books. So, basically new Consumer Protection Acts covers defective products, dissatisfying services and unfair trade practices, and as well as e-commerce also. The basic aim of Consumer Protection Act 2019 is to save the right of consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes. Okay. Now, one of the most important definition of this act, consumer. Who is consumer? Please focus on the definition. Who is consumer? As per the act, a person is called a consumer who avails the services and buys any goods for self use. In the first line, they have given the qualities of consumer. As per act, person is called a consumer who avails the services and buys any goods for self use. Here you have to focus on the word self use। कंज्यूमर वो है जो गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है, किसके लिए? सिर्फ स्वयं के इस्तेमाल के लिए, सेल्फ यूज। ओके, वर्थ टू मेंशन दैट इफ ए पर्सन बायज एनी गुड्स एंड अवेल एनी सर्विसेज फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पज is not considered a consumer। I have specifically mentioned with red color that a person who buys any goods and avail any services for resale or commercial purpose is not considered a consumer। So, when a person is covered under Consumer Protection Act, he is covered under Consumer Protection Act only when he buys goods and services for self use। You must clear this concept. Next, these definitions cover all type of transactions. I am discussing about the consumer. This definition cover all type of transactions, that is online or offline. Whether you have availed the services online, whether you have purchased the goods online or offline,
and these goods and services are covered, or these goods and services are availed for self use, then you are a consumer under the Consumer Protection Act. This was the definition. Features of the Consumer Protection Act 2019. What are the essential features? The Consumer Protection Act 2019 establishes the Central Consumer Protection Authority, Central Consumer Protection Authority CCPA, whose primary objective will be to protect and enforce the right of consumers. CCPA, Central Consumer Protecting Authority, to protect and enforce the right of a consumer. ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन आपके संग धोखाधड़ी करके निकल जाए, आपको चीट करके चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस लॉ के अमेंडमेंट के आ जाने के बाद से। अभी भी बहुत सारे लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट अथॉरिटीज़ के पास सबमिट कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, मैं और मेरा मेन फोकस उसी के ऊपर भी है। आगे, इट इज़ एम्पावर्ड हु, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी is empowered to conduct investigation into violation of consumer right and institute complaints and prosecutions. Order recall of unsafe goods and services, order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisements, impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers of misleading advertisement. कई तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं कि इस चीज़ की मेडिसिन लीजिए तो इसमें रिलीफ मिलेगा। आपने उस एडवर्टीजमेंट पे बिलीव करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदा और आपको पास वो रिलीफ नहीं मिल पाया जिस पर्पज़ के लिए आपने परचेज़ करी थी, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सर ये मिसलीडिंग है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। किसके पास? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ के पास। ठीक है। एम्पावर्ड का मतलब होता है रूल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। रूल्स ऑन ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द गवर्नमेंट विल नोटिफाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020। एज यू नो, this act is implemented in 2020 and further amendment or rules will be issued by the authorities. As basic authority, Central Consumer Protection Authority has been established, and now the authority will look after amendment and rules regarding Consumer Protection Act. E-commerce entities are required to provide information to consumer relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee. You all have studied the concept of conditions of warranty in Sale of Goods Act 1930. So, e-commerce entities are required to provide information to consumers relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment, grievances, redressal mechanism, payment methods, security of payment method, charging back options and country of origin. All these details you have seen when you opt for any online platform seller like Amazon or Flipkart and Mitra. These are necessary for enabling the consumer to make an informed decision at the pre-purchase stage.
कह रहे हैं कि जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डील कर रही हैं, उन सभी कंपनीज को सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करनी होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? रिफंड से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, कंडीशन, वारंटी एंड गारंटी की क्या, डिलीवरी एंड शिपमेंट एंड पेमेंट मेथड। ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे इन सारी चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, बट एक्ट ने इन चीज़ों को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है। These platform will have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of receipt. They will also have to appoint a grievance officer for consumer grievance redressal. Suppose किसी कस्टमर ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. Suppose a customer has placed an order for buy a mobile phone. ही है सर्टेन ग्रीवेंसेस, उसको मोबाइल पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, या स्क्रीन टूटा हुआ था, वॉट एवर मे बी द कंडीशन. तो ये कह रहे हैं, एक्ट ये बोल रहा है कि जो सेलर है पहले उसको खुद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए, और अगर कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर्स की दिक्कत को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, कंज्यूमर के पास राइट है, वो कंप्लेन कर सकता है. The consumer protection e-commerce rules 2020 are mandatory and are not advisories. ये जो सारी रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि क्या कंडीशन है, क्या गारंटी है, वारंटी है, पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, सिक्योर पेमेंट का क्या सिस्टम है आपके पास, रिफंड का क्या ऑर्डर है, रिटर्न की क्या पॉलिसी है, ये सारे के सारे चीज़ें कह रहे एडवाइजरी नहीं है. On online e-platform, all the seller or service provider must follow these guidelines. That's why I have, your act has mentioned mandatory word, and I have highlighted that mandatory word. Sellers cannot refuse to take back goods or withdraw services or refuse a refund. If such goods or services are defective, deficient, delivered late, or if do not meet the description on the platform, the rules also prohibit the e-commerce companies from manipulating the price of the goods or services to gain unreasonable profit through unjustified prices. ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने मैक्सिमम फोकस ई कंटेंट को लेके किया है, ई प्लेटफॉर्म को लेके किया है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ऑफलाइन मोड में सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो कवर नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अमेंडमेंट आया है, तो वो अमेंडमेंट बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को. नेक्स्ट, A manufacturer or product service provider or product seller will be held responsible to compensate for injury or damages caused by defective product or deficiency in services. Basis for product liability action, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है किसी प्रोडक्ट में, डिज़ाइनिंग डिफेक्ट है, डेविएशन है, तभी आप देखते होंगे कहीं पे भी, और ये ऑफलाइन मोड की बात हो रही है, कि कई बार आप देखते होंगे कस्टमर्स से ऑटोमोबाइल्स कंपनियां गाड़ियों को बाय बैक करती है, रिकॉल करती है, वो सब इसी की वजह से. फेलिंग टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन फॉर करेक्ट यूज एंड सर्विस प्रोवाइड, फॉल्टी, इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट. पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एडल्टरेटेड और स्प्यूरियस, को मिलावटी सामान अगर कोई लोग बेचना है, स्प्यूरियस और एडल्टरेटेड का मतलब यही है. इन केस ऑफ द फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार अगर आप गलती कर रहे हैं, अ कॉम्पिटेंट कोर्ट में सस्पेंड एनी लाइसेंस इशू टू द पर्सन फॉर ए पीरियड अप टू 2 years. अगर आप स्प्यूरियस एडल्टरेटेड काम कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस, जैसे सबसे सपोज आप कोई खाने का प्रोडक्ट बना रहे थे, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया FSAAI जिसको आप बोलते हैं, उसने लाइसेंस दिया हुआ, आपका लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. मे कैंसिल द लाइसेंस, या परमानेंटली आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है.
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेसोल्यूशन मैकेनिज्म और मीडिएशन मतलब मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। अ कंप्लेंट विल बी रेफर टू द कंज्यूमर कमीशन ऑफ मीडिएशन वेयर स्कोप फॉर अर्ली सेटलमेंट एग्जिस्ट एंड पार्टीज एग्रीज फॉर इट। अगर सेलर और बायर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कह रहे हैं कि अगर वो कंज्यूमर कमीशन के पास भी जा सकते हैं मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के पर्पज से। द मीडिएशन विल हेल्ड इन मीडिएशन सेल्स विच विल बी एस्टेब्लिश अंडर द एजेस ऑफ कंज्यूमर कमीशंस एंड देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। ये तो सबको मालूम है, मीडिएशन के थ्रू अगर कोई भी सेटलमेंट होता है तो उसके लिए अगेंस्ट में कोई अपील नहीं जा सकती, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लोक अदालत का। एंड नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन फॉर द कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस। कस्टमर से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उस प्रोसेस को ईजी करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। एम्पावरिंग द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू रिव्यू देयर ओन ऑर्डर, enabling a consumer to file a complaint electronically and in consumer commission that have jurisdiction over the place of residence. I will discuss this, how the complaint is filed and through the platform by which the complaint is filed. Video conferencing for hearing and deemed admissibility of complaint of the questions of admissibility is not decided within the specified period of 21 days. ऐसा नहीं कंप्लेन कर दी तो फुर्सत पा गए, 21 डेज के अंदर अथॉरिटीज़ को सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट है order rules and regulation as per the consumer dispute resolution commission, there will be no fee for filing case up to 5 lakhs। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंज्यूमर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जाके कोई भी चीज़ को अगर सेल परचेज करना है तो 5 लाख रुपए तक की कोई चीज़ से डिस्प्यूट है उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ऑनलाइन मोड में आप जाके काम कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्ट से रिलेटेड पूरी के पूरी चीज़ें। अब हम लोग कंप्लेन के बारे में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।